So the first thing that 1% successful people do consistently and they don't procrastinate in it is like, so do you guys know what are the habits that rich people build and we middle class people never reach that level? And we just think, अपन लोग ये सोचते हैं कि they do something extraordinary and we can't do, and that's why we can't gain success. You're wrong. There is no such thing that they do are outstanding and we lack there. There are some basic habits that they build consistently throughout the lifespan, and that makes them rich. So here are some of the habits which they built, and now they are the 1% of the population, and they are not the 99% of the population which procrastinate. It's easy to procrastinate, but it's very hard to stay consistent throughout the lifespan. Okay, so the first thing that they do is this. They do this. They just read lot. 99% the rich people who are there today, like Bill Gates, Ambani's, Elon Musk, they just finish a book weekly. And that doesn't mean कि आप कौन सी book read कर रहे हो. That doesn't matter that which genre you're picking. It doesn't matter. It just matters कि you're reading, you're improving your vocabulary, you're not on the same page who you were yesterday, you are one page ahead from everyone else. Okay, so it's not about finishing a book, or it's not about कि हम दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं या फिर दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं. I'm not talking about these books just because I like them or I like reading and I make a lot of videos on books. Like my past video was on book review. So it's not about that I like reading and then I'm making the stuff. Okay, so एक टाइम ऐसे था कि I used to hate reading, and how I developed the skill of reading. Many people say that okay, we are agreed on the thing that we have to read, but we just can't inculcate the habit of reading. हम लोग खुद को एक चेयर पे बैठा के बुक उठा के रीड नहीं करवा सकते. We just lack in that. Okay, you give us a book, I'll read, but I just lack in that I'll sit and read a book. They just get lazy over there कि उनको याद नहीं रहता, या फिर they just don't get motivated, या फिर उनको कुछ point नहीं लगता book read करने में. So it's not about that मैं बहुत बचपन से read कर रही हूँ और I'm just very good at it. No. I used to hate reading. Basically, I used to hate reading. From that to, my God, this. I just got mature. I just started reading a lot, and I'm sorry. Actually, I'm lacking at my words and my confidence a little bit, but I'll improve it also with reading. Okay, so sorry, I get distracted. The second thing that rich people don't do is they don't get distracted. समझ रहे क्या? Okay, so the thing was कि हम आदत कैसी बैठा बुक्स पढ़ाने की, तो ऐसे किसी को आदत नहीं लग जाती. I used to hate reading. Then reading चालू कैसे हुई मेरी? So my Masi used to always shout at me that go get a book or get a newspaper or just go and read something, and I was like, I just don't want to read anything because I'm not interested in reading it. And then she used to force me for years, like for 12 years she just told me go read, and I just did not even pick a book or newspaper, not even once, to read. Okay, then once in her home I just got this book called Who Will Cry When You Die. Okay,
So that book just changed my life, my perspective of reading. I just got interested in books. Not like I just liked book, I just got interested. I just thought ki, okay, books are not that bad, I can try. So that was my genre of starting. Then it started with all many books, and I ended up reading last year 29 books in just a year. And now I read a book in a day. Okay, a book in a day. My target was to read a book in a week. Reach people to read a book. They just finish a book, any book in a week. About again about the books they read. They just consistently go on reading. Now what reading gives you? ये सबको पता है. ऑल ओवर इंटरनेट ने भरा पड़ा हुआ है कि क्या रीडिंग देता है, क्या फ़ायदे होते हैं उससे. बट कोई भी रीड नहीं कर रहे तो भी हम है कि ये वीडियो देखेंगे. ये वीडियो देखने के बाद वी आर लाइक कि हाँ ठीक ही है, कौन सा एक दिन में आज चालू करके बुक पढ़नी चाहिए, नेसेसिटी थोड़ी है, हम थोड़ी मर थोड़ी जाएंगे कल. It's not about anyone will die, but yeah, you will always stay back from all the people you're hanging out if you don't read. You read anything, you read articles, you read books, you read magazines, newspapers. There are out so many sources there that you can read. You can improve yourself, and it's not about just improving your vocabulary, it's about the mindset you get. Okay, so the mindset you have now or today is not going to be your mindset after you read 4 to 5 books. It's definitely going to change. Definitely there will be a lot of positive affirmative changes in your behavior after reading a book, and which will not be there before. ठीक है. Again, books are the second thing you should read books, that books heal you. They just heal you very goodly. There is this book, 1 year with me. This book, I think when I was struggling with my life, or I was just out of my mental peace, this book out here helped me. It's mine book, मतलब ये book मुझे help कर गई, आपको कोई और कर जाएगी. I have no problem in it and no issue even flexing this book, but just this book literally changed my life. If tomorrow someone asks my god, ठीक है, अगर कल कोई मुझे पूछता है कि क्यों तुम्हारी लाइफ बदल गई है इस बुक की वजह से, then I'll see that the books heal a part of person which humans can't, which only animals and books can. Okay, so only this can, this has, and there are many books out there which I read continuously, consistently, and stable position, and it's in a stable position. So there are so many books. Like you should just go get your genre first. देखो कि तुम्हें कौन सी बुक पसंद है. यू लाइक फिक्शनल, नॉन फिक्शनल. ओके, फिक्शनल पसंद है तो उसमें कौन सी पसंद है. यू लाइक इमेजिनेशन, डू यू लाइक fantasy, do you like any okay, mystery, what do you like in it, thriller, or you like suspense, you like which what is that. Okay, नॉन फिक्शनल में आपको क्या पसंद है, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी. Okay, there are a lot of books out there and lot of genres. You just need to go and see कि आपको इंटरेस्ट किस में. ऐसे नहीं है कि मैं बोलूँगी जस्ट टू गो एंड रीड साइकोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी बढ़ाओ, या फिर देर आर वेरी लेस बुक्स विच आई हैव रेड अबाउट साइकोलॉजी. आई थिंक एटॉमिक हैबिट्स, बिकॉज इट वॉज वेरी फेमस, आई जस्ट read it. I don't think I just learned a lot from this, but yeah, it's a very good book to change your habits or to inculcate new habits. Then again I read this book. Okay, this is also a very basic and a good book about your perspective, your lifestyle, आपको कैसे अपनी लाइफ सुधारनी चाहिए, या फिर एडवाइस वाली बुक. इट्स अ वेरी ग्रेट बुक.
Okay, these are only the two, yeah, and this one ignited mine. I just read 3 books. Okay, which no, this is energize your mind. 4 books which are I guess non fiction. जब आप fiction पढ़ते हो ना तब क्या होता है कि you just get to know some things, get to know some words or some sentences or feelings that you need to express in a particular time. अगर time निकल जाए तो no use of anything, so you just need to understand. From fiction I've learned a lot of things I've been learning and learned by reading fictional, and there is everything out there that I have read from a book. Like I've read a book and I've got a very good माइंडसेट शिफ्ट कि ओ शिट मेरे को इस टाइप से नहीं इस टाइप से सोचना था, और मैं इतने देर से कुछ अलग ही सोच रही थी. एंड इट्स ऑल अबाउट your mindset. Okay, so coming and talking to fiction, I've read so many books in fiction, I'll show you, and they all are different, like they are all different. I'm just collecting them. Okay, so I'll show you again. These are some books which I read. Again, these are some books I read in just a year. Okay, so I know they're less, but I'm trying. मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रही हूँ, मैं जिंदगी में एक काम कर रही हूँ, वो जिस एक काम आ रहा है मेरे को, ठीक है. तुम कुछ तो एक हैबिट सुधार लो. मैंने एक हैबिट सुधार लिया ना, लाइक कैसे लग गई मेरे को ये हैबिट. मैंने ज़िंदगी बदल दी मेरी खुद की. मैं पढ़ रही हूँ, कुछ तो कर रही हूँ ज़िंदगी में, ठीक है. तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग खुश हो जाओ कि वो लोग ज़िंदगी क्या जी रहे हैं जिसने अभी तक पढ़ना नहीं चालू किया. ओके ओके, ये बाल अटक कर बीच बीच में, ठीक है. सो आई रेड दिस बुक. This book taught me that never do extreme anger. इंसान की वैल्यू करो और जो आपके पास है उसके संभाल के रखो. Even if it's your mom, dad, even it's your relatives, even it's your best friend. Oh my god, no best friend traumas. ठीक है, तो सबको संभाल के रखो क्योंकि कौन कब मर जाए और आपको कुछ बताना है और वो छूट जाए पता नहीं. सो जस्ट कीप देम क्लोज टू योर हार्ट. हु इज़ क्लोज टू योर हार्ट, गो शेयर देन एवरीथिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला. आई जस्ट गॉट टू नो. देन दिस this book tells me the importance of time. Like time is so much important into our life कि ये book बताती है सब time travel के बारे में. So this book just got my mind shift into time की वैल्यू करना सीखो, which I personally don't do. मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है and I just go on wasting it. जैसे मेरे बाप का पैसा है कि मैं उधर कर रही हूँ. सॉरी, उधर इज़ अ मराठी वर्ड, आई नो, बट स्टिल कि आई डोंट नो आपकी सीख क्या होगी या फिर व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव, योर माइंडसेट. इट्स ऑल डिफरेंट. ओके, मुझे जो समझ आ रहा है नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें भी वही समझ आना चाहिए. तुम्हें कुछ अलग समझ आ सकता है, तुम्हें कुछ अलग हिट हो जाए, तुम्हें कुछ अलग मिल जाए. सो देयर वॉज दिस बुक विच आई रेड, दिस वन बुक, एंड मैंने इसके बाद से मेरे नेचर में इतनी चेंज हो गई. आई यूज़ टू बी द एंग्रीएस्ट पर्सन इन द होम. मेरे को अगर कोई बोले कि इधर से सरक तो मैं आई जस्ट स्टेयर कि हाउ डिड यू से दिस टू मी, हाउ डिड यू से, एंड आई जस्ट शाउट, आई जस्ट गेट एंग्री एंड इट्स वेरी मतलब इनसेन है ये. ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आई यूज़ टू डू इट. आई डोंट डू नाउ. ओके, सो मेरे में एक बहुत एंगर इशू था, बहुत ज़्यादा एंगर इशू. सो ड्यू टू दिस बुक, after I read this in 11th, maybe 12th and first year, and now it's 1.5 years, I just stopped getting angry on people. I have stopped getting angry. मैं चाह के भी गुस्सा नहीं कर सकती. I just don't, because this book, those who are readers out there will know about this book. ओके, और जिनको नहीं पता है जाके सर्च कर लो कितना क्या है कि मेरे इसमें पूरे के पूरे इश्यूज सॉल्व हो गए. इफ़ यू इंटरेस्टेड यू विल गो एंड चेक आउट देयर. ओके, सो दिस वॉज नॉट अबाउट गेटिंग रिच और समथिंग, बट मेरे में एक ऐसी कमी थी टू गेटिंग एंग्री विदाउट रीज़न, एंड बुक्स जस्ट सॉल्व इट.
मतलब मेरे को इंसानों ने कितनी बार बोला कि गुस्सा मत किया कर, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स ऐसा वैसा, पर्सनालिटी ख़राब ऐसा। मैंने किसी का कुछ नहीं सुना, और जब ये पढ़ा दिल टूटा, चूर चूर हुआ, तो अब मैं चाह कर भी गुस्सा नहीं होती। दैट्स व्हाट बुक टीच यू। एंड आई थिंक अभी के लिए इतना ज्ञान इज ओवर योर हेड अबाउट बुक्स, ठीक है? सो इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ बुक्स, टेल मी, आई मेक अ डिटेल्ड रिव्यू वीडियो अबाउट ऑल द बुक्स, like which book you should read, which book you should not, which book I personally like, which I don't like. Again, there is a second video coming about the second habit that rich people do and we don't do. Okay, the first was reading books. Like जस्ट अपने दिमाग में बैठा लो, इधर चिपका लो बोर्ड पे कि मेरे को रीड करना है, एटलीस्ट मेरे को मंथली एक बुक ख़त्म करनी है, ठीक है? गो सेट सम टारगेट्स। एंड ऐसे नहीं है, मेरे को पता है कि आप लोग बहुत खर्चा करते हो, ठीक है? ऐसा कोई इंसान नहीं है जो खर्चा नहीं करता, कंजूस इंसान भी खर्चा कर ही लेता है। तो जाके 200-300 रुपए की बुक ले लो। आई नो बुक्स आर टू मच एक्सपेंसिव, लाइक टू मच एक्सपेंसिव, बट गो बाय सम बुक्स फॉर योर सेल्फ केयर, ठीक है? खुद के लिए देर आर बुक्स आउट देयर विच जस्ट पैम्पर्स योर इमोशन, लाइक आई डोंट लव यू एनी मोर, warmth. These books just pamper your emotions. If it's that kind of thing, if you want to get pampered, go choose that kind of books. But it's very much important to get a habit of sitting and reading a book. अब आप ये कैसे करने वाले हो या सिर्फ ये वीडियो देख के you're going to skip, it's all up to you. But it's my thing, my advice to you कि go out there. मैंने भी अभी शुरुआत की, आप भी जाओ शुरुआत करो। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि I'll just take a camera, sit and I'll speak. But yeah, today books gave me that confidence. A very, very big thing you need to learn from books is confidence. They, okay, give you confidence कि they just give you confidence. I don't know किधर से आता है वो कॉन्फिडेंस, या फिर ऐसे ऐसे किताबों में से उड़ के आता है, बट जस्ट यू रीड, finish, read, finish, read, finish, and then someone comes and talks to you. You are not the person who will sit and listen to everything what they say and ignore. You will become a person that you will start to reply them back. You will start to reply them. You will start to make understand them your perspective, your point of view. You will even see their point of view. Okay. So there are a lot many changes in your mindset, perspective, and your body language, even the way you speak, even the confidence. अगर इतना सब कुछ फोकट में मिल रहा है, थोड़े आँखों को कष्ट लगाने लग रहे तो लगाने पड़ रहे तो लगा लो ना, जाओ, वैसे भी बहुत कष्ट लगाते हैं, ठीक है? तो बुक पढ़ लो, बाय।